Good morning, friends. Today we are going to study about a specific topic, the cell and its structure and its function. So, let's start. First of all, we start the chapter. I want to tell about some special things about the cell. Cell is a basic structure as well as functional unit of living organism. As a building is made from the brick, that brick is the smallest unit for making the buildings. Okay, same as cell is the smallest unit to make the body. Okay, that's clear how is it is a basic structure. Now come on the functional structure. The group of cell combine to make a tissues, and the group of tissues combine to make a organ system. An organ system is made from the organ which is made from the tissues, and we know that organ system is lead to the foundation of a body of any living organism. That's why cell is basic unit as well as functional unit. So this is the common features of the cell which I tell to you. Now we are discussing how the cell discovery of the cell. Robert Hooke was the first scientist who discovered the cell in 1665 by observing the cork of a tree, which cork is generally a product which are obtained from the bark of the tree. Okay, he observed the cork by the self-designed microscope, which is just like honeycombs. जब उन्होंने देखा सेल को, when he watch the cell carefully, he sees such structures, honeycombs like structure, and thus he give him the name cell. Cell means in Latin, cell means a little home. Okay, now just we now going to study about deeply in this chapter cell. Variation in the number सेल नंबर शेप साइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखिए, सेल का नंबर, सेल का शेप, सेल का साइज हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है. ओके, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल नंबर्स. देखिए, सेल नंबर्स के अकॉर्डिंग जो होता है, सेल नंबर जितने जिस ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रहेंगे उतना उसका हाइट अधिक रहेगा. फॉर एग्जांपल अर्थवर्म वी सी द अर्थवर्म, इट इज़ अ वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटा होता है साइज में. एंड वी ह्यूमन आर लार्जर दैन द सिल्क मॉथ और सिल्क वॉर्म. हम ह्यूमन जो सिल्क वॉर्म और सिल्क मॉथ से बहुत बड़े होते हैं. क्यों? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट? द रीज़न बिहाइंड इट इज सेल नंबर. ड्यू टू द सेल नंबर वी आर लार्जर दैन द अर्थवर्म. ओके, नाउ on the basis of cell number, cell is divided into unicellular and multicellular. Sorry, cell not human, or not only human, all the living organisms are divided into unicellular and multicellular. Okay, now what is unicellular organism? Those organisms which are formed by only one cell, like microorganisms, as well as amoeba and main type of fungi, bacteria, and many more. Okay, now we are going to study about the cell shape. Okay, what is cell shape? The shape of the cell differ not only in the different organisms. देखिए, सेल है तो उसका शेप अलग होगा ही होगा. ठीक है, क्यों अलग होगा? क्योंकि ऑर्गन्स के डिफरेंट वर्क्स होते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल एक नर्व सेल लेते हैं. इस नर्व सेल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है. फाइबर लाइक स्ट्रक्चरली ये लॉन्ग होता है, फाइबर की जैसे बड़ा होता है. क्यों? क्योंकि उसको नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र करने होते हैं. इसीलिए द शेप ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन द लोकेशन of the cell and the function of tissues which are made by the combination of the cell. For example, nerve cells are helpful for the formation of nerve tissues. Okay, and this nerve tissues form the nervous system. That's why it is long fiber like structure for support the nervous system. Okay, now just think about the cell size. अब देखिए, सेल का नंबर डिफरेंट था, सेल का शेप डिफरेंट है, तो सेल का साइज डिफरेंट होना
आम सी बात है, क्योंकि जैसे मैंने बताया शेप क्यों डिफरेंट होता है, साइज़ में भी वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। कैसे? दो जो स्मॉलेस्ट सेल होता है पीपीएल होता है, स्मॉलेस्ट सेल इज पीपीएल हो, उसको माइक्रोप्लाज्म भी कहते हैं, 0.1 माइक्रोन लंबाई होता है। अच्छा, नाउ व्हाट इज माइक्रोन? द माइक्रोन इज अ यूनिट विच आर हेल्पफुल फॉर द, अच्छा देखिए, हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं, मीटर का यूज़ करते हैं। वाई यूज़ किलोमीटर एंड मीटर? फॉर हाइट नापने के लिए, हाइट बताने के लिए कि इस सब्सटेंस का हाइट कितना है, वैसे ही सेल का हाइट बताने के लिए माइक्रोन का यूज़ किया जाता है। और 1 माइक्रोन जो होता है वो 10 का पावर -6 मीटर होता है। और सबसे बड़ा जो सेल है वो ऑस्ट्रिच एग है। हाँ, तो अभी बताते हैं आपको कि एग भी एक तरह का सेल होता है। ओके, देखिए ये एग, इट इज़ एन अ सेल, इट इज़ एन अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ सेल। ओके, now we are discussing the part of the cell, which type of parts consist by the cells. okay, तो देखिए ये सेल है हमारा, ये ऊपर का जो पोर्शन होता है जिससे सेल कवर्ड होता है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वाई वी कॉल इट अ सेल मेम्ब्रेन? बिकॉज इट प्रोटेक्ट द एंटायर एरिया ऑफ द सेल एंड द इंटायर लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल। जो भी सेल के लिविंग पोर्शन होते हैं आर नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ओके, what they call protoplasm. Living structures of the cell is called a protoplasm. Now it contain a nucleus and nucleus. Now let's discuss about this all part very carefully. Cell membrane. All the living organisms are bounded by the membrane. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है हमारे सेल के अंदर जो कि लिविंग होता है। देखिए सेल का जो भी, पहले ही हम बता दिए थे, जो भी सेल का लिविंग सब्सटेंस होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, एंड दिस प्रोटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि प्रोटेक्शन की जरूरत सबको होती है, विदाउट प्रोटेक्शन इट डू नॉट वर्क। ओके, नाउ अब सेल मेम्ब्रेन तो है, लेकिन एक किसी भी सेल को एडिशनल सपोर्ट देने के लिए, एक रेगुलरिटी देने के लिए एक सेल वॉल की इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल प्लांट, हम ह्यूमन्स चल सकते हैं यहाँ से वहाँ तक और हम खुद के प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बट हाउ डज प्लांट प्रोटेक्ट अस? प्लांट कैसे प्रोटेक्ट करेंगे खुद को? ये तो चल भी नहीं सकते। हम मूव करते हैं लेकिन चलते तो नहीं है ना हम लोग की तरह। दैट्स वाई the additional outer covering cell wall is present in the plant cell. Some fungi and bacteria are also made from the bounded by the cell wall. Okay, cytoplasm. Cytoplasm is gel like substance which is present between the nucleus and the cell membrane. Cell membrane और nucleus के बीच जो भी gel like substance present रहते हैं उसको काइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, काइटो मतलब होल होता है इन लैटिन, एंड प्लाज्मा मतलब लिक्विड। ओके, इसको ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं क्योंकि ये सेल के ग्राउंड्स एक्टिविटियों में वर्कफुल होता है। जैसे हाउ इट इज़ वर्क इन अ ग्राउंड सब्सटेंस इन प्लांट्स, इट मेक अ फूड बाय द हेल्प ऑफ अ क्लोरोप्लेट्स। तो क्लोरोप्लेट्स फूड बना रहा था, एक ग्राउंड काम कर रहा है, ग्राउंड स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। दैट्स वाई दे नोन एज ग्राउंड सब्सटेंस। ओके, दे आर मेड फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स अलॉन्ग विथ अ लार्ज proportion of water. Okay, now we are discussing about the nucleus. Nucleus is very important for us. It's control the all important activity of the cells, and it is also surrounded by a dense structure called nuclear membrane. Now today we are which is things which we study about the cell, how it is known as basic structure as well as functional structure. We are study about discovery of the cell, we study about the parts of the cell and how they are different in number, shape and sizes. Tomorrow we will discuss cell organelle in our next video. Thank you for watching.